वेलकम बैक एवरीवन। आज आम रिसर्च एप्टीट्यूड रो इम्पोर्टेंट MCQs और PYQ गुडी को डिस्कशन करिबा। तो चलंतु स्टार्ट करिबा। प्रथम क्वेश्चन टे हला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परसुइंग रिसर्च। तो जदि हमको रिसर्च करिबा को अछि कोन प्रथमे आवश्यक, कोन फर्स्ट जिंसटा कोन। फर्स्ट ऑप्शन ए हला डेवलपिंग ए रिसर्च डिजाइन, ना फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन, ना डिसाइडिंग अबाउट द डाटा एनालिसिस प्रोसीजर, ना फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च हाइपोथेसिस। कोटा ठीक है जीवो। तो हमको रिसर्च कोन पई करिवार अछि। फर्स्ट गोटे हमको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिवार अछि, कोन क्वेश्चन अछि तार सॉल्यूशन हमको आनिवार अछि। तो फर्स्ट कोन, फर्स्ट हमर मैंडेटरी रिसर्च पई हला आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम बा फाइंडिंग ए फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन। तो कोठी अछि हमर आंसर बी। बीटा अछि फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन। तो रिसर्च डिजाइन तो हम ता परे करिबा, डिसाइडिंग अबाउट द डाटा ता परे परे करिबा, बट प्रथमे हमको आइडेंटिफाई करिवार अछि गोटे रिसर्च क्वेश्चन किंबा प्रॉब्लम कोन सेही विषय रे आइडेंटिफाई करिवार अछि। सेकंड नंबर क्वेश्चन हला, केस स्टडी कलेक्ट्स द डाटा फ्रॉम द फॉलोइंग रिसोर्स। तो केस स्टडीटा एमाननको मध्यरु कोठारु डाटा कलेक्ट करिथाय बोली पचारिछि। फर्स्ट हमरा ऑप्शन हला फ्रॉम इंडिविजुअल, फ्रॉम एनेक्डोटल रेकॉर्ड, ना फ्रॉम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, ना फ्रॉम ऑल ऑफ द एबव। कोथरु हमें जदि केस स्टडी करिवार अछि गोटे पर्टिकुलर जिनिस उपरे, तो हमको कोथरु डाटा कलेक्ट करिवार अछि से पचारुछि। कोथरु होई जेबो, आमे जदि केस स्टडी करिबा आमे कोन करिबा, गोटे इंडिविजुअल रु भी डाटा कलेक्ट करिबा, तार एनेक्डोटल रेकॉर्ड रु भी, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स रु भी। हमको इन डेप्थ केस स्टडी रे हमें इन डेप्थ स्टडी करूछु। सो हमरा ऑप्शन हि जेबो फ्रॉम ऑल ऑफ द एबव। सबुठु हमें डाटा कलेक्ट करिबा। आंसर हि गला डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जे which of the following statement is true in the context of the testing of hypothesis. So hypothesis testing ପାଇଁ କୋଉଟା true କହିଛି। ସେ mostly null hypothesis କଣ, alternative hypothesis କଣ ସେଇ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। A ହେଇଗଲା, it is only the alternative hypothesis that can be tested। ସେ କହିଛି ଯେ ଆମେ only alternative hypothesis को test କରିପାରିବା। B ହେଇଗଲା, it is only the null hypothesis that can be tested। C ହେଇଗଲା, both alternative और null hypothesis को हमें टेस्ट करिपारिबा। D ହେଇगला, alternative null काहाको मध्ये हमें टेस्ट करिपारिबा नहीं। तो आमे null hypothesis ता कोन पय नै थाउ, null hypothesis ता एठी पय नै थाउ जे ताको हमें टेस्ट करिपारिबा। तो हमर कोटा करेक्ट हे जिवो, B नंबर ऑप्शन ता जोड़ा देछि, it is only the null hypothesis that can be tested। Next question hela, a researcher is interested in studying the prospects of a particular political party in an urban area। what tool should he prefer for the study। से गोटे urban area रे गोटे political party उपरे study करिया पय चाहूची। तो एमानंको मध्यरु को टूल टा से यूज करियो, को रिसर्च टूल टा यूज करियो बोली पचारिछि। रेटिंग स्केल, ना इंटरव्यू, ना क्वेश्चनएयर, ना शेड्यूल। जति पॉलिटिकल पार्टी विषय रे से कलेक्ट करियो पय चाहूची, तो से कोन यूज करिवो, क्वेश्चनएयर। क्वेश्चनएयर मेथड इज बेस्ट। नेक्स्ट देखिबा हमें, generally the external and internal validity is present in the inference we get from। internal और external validity को माने मेथड रे यूज हुए बोली से कहछि। एक्सपेरिमेंटल मेथड, ना सर्वे मेथड, ना एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड, ना नॉन ऑफ द अबव। तो हमर जो एक्सटर्नल इंटरनल वैलिडिटी कोठी मोस्टली हमर यूज हुई था, एक्सपेरिमेंटल मेथड। आमे जदि एक्सपेरिमेंटल मेथड करूछु, हमर जहाँ भी एक्सटर्नल इंटरनल जहाँ भी
भेरिएबल्स माने मध्य रही सेटा मध्य इफेक्ट पकेबार चांसेस थाए तो हेजबो हमर आंसर एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट देखिबा द कोर एलिमेंट्स ऑफ डिसर्टेशन आर। डिसर्टेशन रो कोर एलिमेंट कोन बोली से पचारिछि माने ताकू गोटे फॉर्म रे लेख गोटे सिस्टमैटिक कोटा हबो बोली पचारिछि। इंट्रोडक्शन ना डाटा कलेक्शन ना डाटा एनालिसिस ना कंक्लूजन ना रिकमेंडेशन। ताम फर्स्ट कोन लिखि थाओ डिसर्टेशन रे इंट्रोडक्शन देन आमे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करि थाओ देन से ऊपर कोन कोन रिसर्च हेची ता ऊपर लिटरेचर रिव्यू सब कलेक्ट करि थाओ देन आमे हमर मेथोडोलॉजी गुडी को यूज करू देन आमे एनालिसिस करू डाटा को देन डिस्कशन रिजल्ट आम बाहर था तापर डिस्कशन आ कंक्लूजन करि थाओ। तो फर्स्ट एठी देखो इंट्रोडक्शन ए दुटा रे फर्स्ट अछि देन एठी दे देला डाटा कलेक्शन बट आमे कोन जानले जे लिटरेचर रिव्यू हबो देन रिसर्च मेथोडोलॉजी रे ही आसी जेबो हमर डाटा कलेक्शन डाटा एनालिसिस सेथरे पळे आसीबो देन हमर हबो कोन रिजल्ट्स बाहरला देन डिस्कशन एंड कंक्लूजन ऑप्शन डी टा हेजिबो करेक्ट। नेक्स्ट हला the frequency distribution of a research data which is symmetrical in shape similar to a normal distribution but center peak is much higher ताको आमे कोन कहबा पछारिछि गोटे आमे जानि छ तमे माने सब पॉजिटिवली स्क्यूड गोटे थाए नेगेटिवली स्क्यूड गोटे थाए गोटे लेप्टोकोर्टिक थाए आ गोटे प्लाटिकोर्टिक आ गोटे मेसोकोर्टिक तो जो हमर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ता थाए सेटा थाए मेसोकोर्टिक हमर जदि मेसोकोर्टिक ही जानता तो सेटा कोन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जोटा रहउची सेटा हे गेला हमर मेसोकोर्टिक माने मॉडरेट पीक आउ दी साइड रे समान समान रो डाटा रे डिस्ट्रीब्यूट होई थाए बट से कहला the frequency distribution of a research data which is symmetrical in shape to normal probability curve but center peak is more higher center रे बेसी जमा थिबे तो कोन हो गला जेहेतु हायर पीक हे गला तो डाटा आर मोर कंसंट्रेटेड अराउंड द मीन तो मीन पाखरे हमर बेसी डाटा रहिछि बोली जणा पड़िला तो एटा हला कोन हेताय ना सेंटर टा बेसी ऊपर को जायताय जोटा हला हमर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेप्टोकोर्टिक बट जदि हमर प्लाटिकोर्टिक हे जायथांता हमर जो सेटा रहिछि फ्लैटर एटा बेसी एते ऊपर को न हे कि टिके फ्लैटर पीक हेथांता सेटा हेथांता प्लाटिकोर्टिक आ जदि स्क्यूड ता कोन इट इज नॉट सिमेट्रिकल एथरे पहुंचे छै व्हिच इज सिमेट्रिकल जदि हला स्क्यूड ता हला नॉट सिमेट्रिकल तो एटा तो हबनी हमर प्लाटिकोर्टिक भी हबनी प्लाटिकोर्टिक जदि हबो सब आडे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन टिके हिथिबो स्प्रेड हिथिबो लेप्टोकोर्टिक जदि हला एटा सबठु उच्च हो जाबो तो बुझी हला हमर आंसर हि जिवो लेप्टोकोर्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एमानंक मध्यरु कोटा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोली से पचारिछि कोटा हि जिवो सिंपल रैंडम सैंपलिंग ना हमर पर्पसिव ना सिस्टमैटिक ना स्ट्रैटिफाइड कोटा हि जिवो तो आमे जति देखिबा हमर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग रे कोन आसीबो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग पळे आसीबो हमर प्रोबेबिलिटी रे देन सिंपल रैंडम सैंपलिंग मध्ये पळे आसीबो हमर प्रोबेबिलिटी रे देन हमर सिस्टमैटिक सैंपलिंग जोटा हमर जोड़ा nth नंबर रे आमे जो रैंडमली चूज करि थाउ सेटा मध्ये पळे आसीबो हमर सिस्टमैटिक रैंडम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग रे बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग रे कोन आसीबो पर्पसिव नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हला पर्पसिव। नेक्स्ट हला in the list given below identify those statements which correctly describes the meaning and characteristics of a research तो एमानंक मध्यरु कोटा रिसर्च रो कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग को बुझाउची कहिछि
तो देखिदबा फर्स्ट ऑप्शन हमर हला रिसर्च इज मेथड ऑफ इम्प्रूविंग आवर कॉमन सेंस. नेक्स्ट डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स गेट इंटीग्रेटेड इन a research process. Next hela research is creative and charisma. Next, research is the use of the scientific method to provide answer to meaningful question. Next ହେଇଗଲା ଆମର the answers provided by research can be empirical and verified. तो କୋଉଟା ହେଇଯିବ ସେ ପଚାରିଛି. तो ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା जो आईवी नंबरटा ହେଲା research is the use of scientific method to provide answer to meaningful question. कौन research फास्ट गोटे क्वेश्चन फॉर्मेशन करिथाउ. तो एटा तो पूरा करेक्ट ହେଇଯିବ. बाकी सब जदि कंफ्यूजिंग भी लागुची एटा ହେଇଯିବ करेक्ट. तो आईवी कोठी अछि हम टिके देखिदबा. 1 रे अछि आउ 3 रे अछि. तो 4 आउ हमर 2 तो हबनी. नेक्स्ट देखिबा हमें रिसर्च इज ए मेथड ऑफ इम्प्रूविंग आवर कॉमन सेंस. आमर कॉमन सेंस को यूज करिया पई तो हमें रिसर्च करबा दरकार नहीं. कॉमन सेंस तो हमें जनरल नॉलेज पढ़ी के भी हमें यूज करि परिबा. नेक्स्ट देखिबा हमें डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स गेट इंटीग्रेटेड इन ए रिसर्च प्रोसेस. एट हे पारे डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड ता हमर रिसर्च प्रोसेस रे हमें इंटीग्रेट करि परिबा. नेक्स्ट देखिबा हमें method of consulting and using experience is called research. से कहिछि method of consulting and using experience is called research. एटा रिसर्च डेफिनेशन की नुह तो रिसर्च एक्सपीरियंस रो हमें जहा पाइले सेटा से कहउछि रिसर्च. एटा तो भूल हिजिबो. तो भी जोठी अछि हबनी. तो ए थर्ड नंबर रे हमरा भी अछि जोटा हबनी. तो हमरा कोटा करेक्ट हिजिबो 1 नंबर टा करेक्ट हिजिबो जोटा हमरा हला 2 IV and VI. ए तीनटा हिजिबो हमरा करेक्ट. नेक्स्ट देखिबा identify the category of evaluation that assess the learning progress to provide continuous feedback to the student during instruction. तो हमारा जो इवैल्यूएशन प्रोसेस रही प्लेसमेंट हेला डायग्नोस्टिक फॉर्मेटिव समेटिव जैसे कहिछि कंटीन्यूअस फीडबैक कोथरे प्रोवाइड करा जायथे. कंटीन्यूअस कोथरे प्रोवाइड करा जायथे हम जानिछु. कंटीन्यूअस फीडबैक टा कोथरे फॉर्मेटिव रे प्रोवाइड करा जाय. तो हमर आंसर सी हिजिबो करेक्ट जोटा हेला फॉर्मेटिव. नेक्स्ट हेला द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज. ए सेही रिसर्च स्ट्रीम जोटा कि इमीडिएट एप्लीकेशन जहार होइथाय सेटा कोन कॉन्सेप्चुअल रिसर्च ना एक्शन रिसर्च ना फंडामेंटल ना एम्पिरिकल कोटा हिजिबो. इमीडिएट पई हमें कोटा यूज करू सब बेला एक्शन रिसर्च बी हिजिबो करेक्ट. नेक्स्ट सैंपलिंग एरर डिक्रीजेस विथ. आमर जो सैंपलिंग रे जो एरर होची सेटा को हमें केमिते डिक्रीज करि परिबा. एटा गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब बेला प्राय क्वेश्चन आसी थाए. जदि आमे सैंपल रो साइज को इंक्रीज करबा जदि आमे 20 टा नोचू तो हमर एरर अधिक होबार चांसेस अछि. हम 20 न नै कि ता बदल रे हमर सैंपल साइज नै गला 100. तो सेठी कोन थाए हमर जो कोन थाए एरर हबार चांस कम थाए. तो सैंपलिंग एरर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन सैंपल साइज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which of the following is not a parametric test. तो हमारा जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को सब टेस्ट आसी थाए. साइन टेस्ट आसी थाए मेन व्हाइटनी टेस्ट आसी थाए हमर सब काई स्क्वायर टेस्ट आसी थाए. तो ए सब आसी थाए हमर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. पैरामेट्रिक टेस्ट रे कोन आसी थाए टी टेस्ट आसी थाए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आसी थाए. तो जेहेतु टी टेस्ट हमर पैरामेट्रिक टेस्ट तो से दिचे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. तो कोटा इज आंसर ए जोटा हेगला हमर टी टेस्ट.
नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड एमानक मध्यरु कोटा गोटे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड बोली कहूछि आमे कोन पढिले प्रीवियसली भी डिस्कशन कले जे हमर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड रे पळे आसीबो हमर सिंपल रैंडम सैंपलिंग सिस्टमैटिक सैंपलिंग स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग ए सब पळे आसी क्लस्टर सैंपलिंग ए सब पळे आसीबो हमर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग रे बाकी कोटा बाकी रहला कोटा सैंपलिंग तो से कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी कोटा नॉन प्रोबेबिलिटी पचारिछि तो हमर आंसर कोटा हिजिबो नॉन सॉरी कोटा सैंपलिंग देखिदेबा हमर आंसर डीटा हेगला करेक्ट जोटा हैला कोटा सैंपलिंग नेक्स्ट हैला the variable which impacts the relationship between an independent variable and dependent variable is known as तो सही वेरिएबल जोटा कि इंपैक्ट पके थाए हमर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल भितरे ताको कोन कहि थांते तो ताको हम कहि थाउ कंट्रोल वेरिएबल नेक्स्ट देखिबा which of the following sampling method is based on probability एमानक मध्यरु कोटा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोली कहिछि एथरे तो हम 100 थर करि सालेनी 2 थर आगरु प्रोबेबिलिटी रे कोटा पळे आसीबो सिंपल रैंडम सैंपलिंग स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग तो हमर एठी जो दिया हिची स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग सेटा पळे आसीबो हमर प्रोबेबिलिटी रे आ बाकी सब जो अछि सब पळे आसीबो नॉन प्रोबेबिलिटी कन्वीनियंट हला किंबा कोटा सैंपलिंग किंबा जजमेंट सब पळे आसीबो नॉन रे तो डी हिजिबो हमर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हला द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन इज सही रिसर्च जो थरे कि इमीडिएट एप्लीकेशन थाए ताको कोन कहिता हमें एक्शन रिसर्च नेक्स्ट इन सैंपलिंग द लॉटरी मेथड इज यूज्ड फॉर द लॉटरी मेथड माने कोन रैंडमाइजेशन तो रैंडमाइजेशन ता हला हमर लॉटरी मेथड नेक्स्ट हला नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व शुड बी हमर जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व रहिछि सेटा केमिति स्क्यूड कहिछि से नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ता हमर एमति थाए तो एटा ना पॉजिटिवली स्क्यूड ना नेगेटिवली स्क्यूड एटा हेकला हमर जीरो स्क्यूड ऑप्शन डी हिजिबो हमर करेक्ट जोटा हला नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज जीरो स्क्यूड तो ऑप्शन डी हेगला हमर करेक्ट हला